सर, इन सब बातों के बावजूद सर मैं निराश नहीं हूं और मुझे मालूम है सर हम सबको मिलकर काम करना है और भारत को एक सुपर पावर बनाना है और विश्व गुरु बनाना है और मेरी आने वाली सरकार वो किसी पार्टी की भी हो, मुझे उससे उम्मीद है कि वो इन सभी समस्याओं का हल करेगी। और सर अंत में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहे हैं, गरीब आदमी, किसान, युवा, महिलाओं के बुलंद हौसलों को सलाम करता हूं और उनकी तरफ से इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे सपनों की उड़ान आसमां तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमां तक है, कैसे हार मान लूं और मैं थक कर बैठ जाऊं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमां तक है, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमां तक। धन्यवाद सर। श्रीमती निर्मला सीतारमण to reply the discussion. Thank you, sir. So thank you very much, sir. I understand the total of 33 members have spoken, and today, distinctly only on the Finance Commission, Finance Bill, about 9 speakers have spoken. I thank all the members who have contributed to this debate. Although the budget speech and the finance bill all come with the spirit of vote on account and interim budget, there are aspects on which honorable members have spoken. Whilst just highlighting some features of the interim budget and not going into greater details into it, I'll try to respond to as many members who have spoken on the subject. Sir, the budget, and equally, we are talking about the interim budget of Government of India and the supplementary demand for grants for the earlier year, for the current running year 23-24 for the Government of India. And we are also dealing with J&K's budget, interim budget for a part year for 24-25, as much as we are talking about supplementary demand for grants of J&K. So we are dealing with 4 plus the Finance Act. Finance Bill, which on being passed will become the Act. So totally about 5 different legislative things we are talking about. Sir, the highlight of the interim budget is that we are indicating clearly the emphasis given on capital expenditure for one, immediately after COVID to revive the economy, and 2, subsequently after a year or 2, to sustain the good pace at which Indian economy is growing. The route that we are taking is spend on public infrastructure creation, asset creation, because that, as opposed to spending on revenue expenditure, gives you better returns for the investment made. I was a bit astonished to hear Honorable Member Jawhar Sarkar probably confused capital expenditure with expenditure on capitalists. So I'm sorry, capital expenditure is spent on creating assets which can be used by all citizens equally, and their common infrastructure which improves the ease of living for everybody and gives access to farmers, access to small manufacturers to reach the nearest port of call or railway station or market yard in a better way, in a smoother way, in a short time. So it's a bit worrying, and that is because I presume somebody who's had a long tenure in bureaucracy, by mistake, I would like to believe, mixes up capital expenditure with capital. No. Sir, I've heard no, him. He should allow me to speak now. Please. No. This is becoming a bit too much. I will not allow it. We have to believe in some procedure. Please. Yes. I'm Honorable both Minister. here when wrong is being said. Sir, this kind of distortion to certain terminologies which are used in the budget and which have been used even earlier cannot be, I'm sorry to submit, you may correct me, sir,
cannot be without an intent which is not completely bona fide. This is not acceptable at all. And if ideology drives us to say it, please let us have them say that. Honorable members, I respond to. Now, Honorable Member Randeep Surjewala has raised a lot of relevant, pertinent questions on agriculture. I'll certainly give him as much answer as is possible by me. But to give a twist, even tongue-in-cheek twist, in an august house like this, I want the chair to take a view on it, because ultimately all of us are seeking answers, trying to give solutions, and if the answers are not up to it, I'm well ready to accept corrections. This type of twisting on words worry me a lot, because all of us are sitting and hearing one another with seriousness. We want to address it. So, sorry, sir, to begin like this. Sir, therefore, the highlight of the interim budget, being interim as it may, is to underline the fact that, like the way we, during recovery, and post that, to sustain a good growth for the economy and to have a greater multiplier effect, so that without us having to spend on revenue, which gives less return for a rupee, and I'm basing it on a RBI study, if for a rupee spent on revenue expenditure, you get hardly 0.98 only, meaning for every rupee spent, not even 98 paisa return comes. Whereas when you spend on capital expenditure, for every rupee spent, in the short duration, you get about 1.46 paisa, 1 rupee 46 paisa return, and in the medium and long term also there is return. And therefore, the route of spending money through the public investment in infrastructure gives us greater returns, and in situ it creates jobs. Where the projects are being done, where money is being spent, public money is being spent, jobs are created, local services also benefit, and that ripple effect in that ecosystem can have greater impact on the neighboring economies, which are smaller pockets which can become like ripples in a pond. Therefore, this route globally has been adopted as one sure short way in which you can get sustainable growth, and we are seeing it. And therefore, even in this budget, we have committed to spend about 17% higher than even the RE of 23-24. The current year's RE being whatever it is, we are spending 17% more for the coming year. Then, sir, that same outlay is higher than the projected GDP growth rate of 10.5% during the next financial year. So if you're projecting a GDP growth rate, the growth in the capital expenditure for creation of public infrastructure is growing faster than the real GDP growth itself, the projected number. Sir, with the capital expenditure being the focus, equally, in the last 3-4 years particularly, we have made sure our debt management and also the overall management of the fiscal is done in such a way that we honor the glide path for the fiscal deficit that we had given in 21. So, if the glide path for the fiscal deficit had to take one particular trajectory and come down in a particular fashion, we have complied with that. That was approved by the honorable houses and in the parliament, and we have complied with that. This year, actually, I could have stopped at, we've reached 5.9, that is complying with it, that is fine. No, but even further, we brought it down 1 decimal point further down, and instead of 5.9 this year, we have given a fiscal deficit number of 5.8%. Similarly, for the forthcoming year, where it could have been 5.2, we have made an effort to bring it down to 5.1 without in any way compromising on expenditure, particularly on welfare and also taking care of the rural economy. So these 2 points I would like to highlight
for the benefit of the House. And when I said that we are making sure that the fiscal deficit will be managed without hurting any of those projects which are important, I just want to quote a selection of projects and schemes which will showcase that the cut has not happened at all in any of this, that I have to make sure that the fiscal deficit is managed. I'm trimming down on these. None of that. So, for instance, the Department of School Education and Literacy, BE budgeted estimate of 23-24, the current year, during 1st February 23, had 68,805 crores. What we have given in the BE now in the interim budget for the coming year is 72,474. It has not come down, it's gone up. Then the Department of Health and Family Welfare, 86,175 was the BE. Now it is 87,657. It's not come down, it's gone up. Ministry of Minority Affairs, 3,098 crores, BE 23-24. Now it is 3,183 crores. Department of Rural Development, which is so significant for many of the rural-based projects, 1,57,545 crores in the BE 23-24. Now it's gone to 1,77,566 crores. Tribal Affairs, 12,462 BE, 13,000 BE now. Department of Social Justice and Empowerment, 12,847 crores BE, 13,000 crores now. Ministry of Women and Child Development, 25,449 crores BE 23-24. Now it is 26,092 crores for the BE of the coming year. Capital allocations, sir, the major ones, which generate employment, which create assets, which give better market linkages for farmers, and which also provide better connectivity so that ease of living also is highlighted for common citizens. 2,58,606 was the BE allocation for road transport and highways, whereas now in the interim budget, it is 2,72,241 crores. Railways, 2,40,000 crores in the BE. Now it is 2,52,000 crores. Defense, 1,71,375 crores. Now it is 1,82,241. States were given an amount with interest-free proposition, and also that it will be given for 50 years, where they don't need to service the loan, nor do they need to give any principal back. 1,30,000 crore was done in the BE 23-24. We have retained that 1,30,000. So states are actively participating in asset creation with public money. This money is given by us. They themselves would also invest in capital expenditure. So over and above what the states put, that's not a condition, but over and above what they put, we have allocated this much, and they are, as per a formula given for the tax devolution, so is the formula used for this also, so that every state gets a bit of the capital expenditure allocation. So the allocation for major flagship schemes, PM Kisan, about which Honorable Member Surjewala spoke and about which I will certainly reply him, but I want to tell you, 60,000 crores was allocated in the budget estimates 23-24. It continues to be 60,000 even now for 24-25. PM Awas Yojana, rural, 54,487 crores is now 54,500. PM Awas Yojana urban, 25,103 is now 26,171 crores. Jal Jeevan Mission, 70,000 crores in the budget estimate, now 70,163 crores. Rural Employment Guarantee Scheme, the MNREGA, 60,000 in BE 23-24. Now it is 86,000 crores 24-25 BE. Gram Sadak Yojana, 19,000 crore is kept at 19,000 crores.
Samagra Siksha, 37,453 is now 37,500. PLI schemes, 8,965, now it is 16,021. So no major scheme, no major flagship scheme has been curtailed, nor have we reduced the allocation. If I talk about the supplementary, sir, this is the second and the final batch of supplementary for this year 23-24, and in that primarily there are 71 demands, 1 appropriation. But where does this money go? The supplementary demand for grant, if the House passes it, where does this money go? 3,000 crore, that is 3,000 crore goes for nutrient-based subsidy scheme for P&K fertilizers. Department of Food and Public Distribution for PM Garib Kalyan Anna Yojana gets 9,231 crores. Defense Services for their revenue expenditure, which is for meeting additional expenditure towards pay and allowances of armed forces and other establishment expenditure requirements such as stores, transportation and ECHS, get 13,548. Department of Economic Affairs gets 5,000. That is for transfer to Senior Citizen Welfare Fund. Transfers to Jammu and Kashmir, they've asked for 3,000 crores. That is for essentially meeting additional expenditure towards central assistance to the Union Territory for bridging their resource gap. So these are the features, sir. The Jammu Kashmir interim budget and also the supplementary demand for grants, I just want to highlight. The vote on account has come for seeking the approval of the House for 59,364 crores. Their BE for total 24-25 is 1,18,728 crores. Of that, they have sought the vote on account for 59,364 crores. The central government will provide 41,751 crore to the government of Jammu and Kashmir for the year 23-24, and that is the current year, and 37,278 crores in the year 24-25 as assistance to the Union Territory. And their supplementary demand for grants, which I for a moment said from our books, is 8,713 crore, and that is mainly for debt, repayment of debt, and power procurement. So these are the highlights of all the 4 budgets, interim and supplementary, Government of India and J&K. Sir, I'll also for a moment speak about what are the main features of the finance bill this time. With that, I would have addressed the features of all the bills. The main feature of the finance bill, with all the taxes remaining the same, we have not changed the rates at all, is there are certain changes to the TCS regime, the tax collection at source regime, which were made in the Finance Act of 2023. And thereafter, some changes were announced through a press release as a matter of clarification on 28 June 2023. But regarding that clarification was regarding the remittances under the liberalized remittance scheme, the LRS scheme, and on sale of overseas tour packages, the program packages, travel, tourism, tour packages. In line with the announcements made, amendments have been proposed in the finance bill, which is an announcement already made. The mention was already made in the last year's budget, but this is the budget through which, this is the Finance Act bill through which we are coming up with those changes. The second one, sir, which is worth noting, is the startups. Certain startups are eligible for some tax benefits if they are incorporated before 1st April 2024, that is this year. The period of incorporation of such eligible startups is proposed to be extended by 1 year. That is, if they register or incorporate their company by 1st April 2025, they'll still be eligible for those tax benefits.
So we've just given that one extension. Similarly, for units located in the International Financial Services Center, we had earlier said similarly, if they are established before 31st March 2024, those tax incentives will be available for them. But now we are extending them also till 31st March 2025. That's a second change which is being brought through the finance bill. The third one, sir, is an extension again of limitation date of investments made by the sovereign wealth funds and pension funds, the investments being made in India by the sovereign wealth funds and pension funds also attracted some benefits. Those are also, that is, if they invest in infrastructure sector, they are also getting extended till 31st March 2025. And the last one, which is of very important consequence for middle class, small taxpayers, and that is a very big issue which I want to highlight. It is proposed, sir, to remit small unverified demands up to 25,000 rupees, 25,000 rupees, which relate to financial year 2009-10 and also earlier years. Just to remind honorable members that some months ago, there were a lot of discussion about some tax claims are being made which pertain even to 1962, 1970, 1980. How come the tax is being claimed now for those past several years? So those are getting addressed in this, and there are demands pertaining to the financial year 9-10 and also pertaining to the year 10-11, 2010-11. Similarly, the demands for 10-11 up to 10,000 rupees are also proposed to be withdrawn. So it will be a big relief for small taxpayers who are being, for very long years, being pestered for some dues, some 500 rupees, some 1,000 rupees like that, accumulating to 25,000 rupees, and in some other cases 10,000 rupees. So these are the only changes which are being brought in this finance bill, and no tax rates are being amended. So therefore, the discussions which are being held here on these highlighted features and other features is what I want to respond to. So the particular discussion on by Shri A.D. Singh and also Imran Pratapgarhi. I can't see both of them, but never mind. I'll respond to them, sir. Although in Lok Sabha, if the member is not present, I'm not expected to answer, but I will highlight some of the points because many other members may also be interested in knowing the answer. So the labor force in the country has increased from 49.8% in 2017-18 to 57.9% in 22-23. Rural areas, the labor forces increased from 50.7% in 2017-18 to 60.8% in 22-23. The workforce in the rural areas increased from 48.1% to 59.4% by 22-23, sir. So for the rural areas, unemployment rate has actually decreased from 5.3% in 2017-18 to 2.4% in 22-23. So I want this to be laid on the table for clarity, so when members raise the issue, this is something which I would request them to take cognizance of. Similarly, sir, women labor force participation has risen from 37% to 37%. Women labor force participation has risen to 37% in 2023. It is a substantial increase from 23.3% recorded in 2017-18. So in a matter of 5 years, that is where we have gone. And it's also a surge. It is a surge of 13.7% points during the last 5 years. Female enrollment in higher education has also increased
by 32% since 2014-15. So there are facts which all of us should take cognizance of, even as we talk of our Indian economy. There's more work to be done, I grant that, but there are significant progresses being made. We need to take cognizance of it, sir. So one of the members, again probably Shri A.D. Singh and Shri Imran Pratap Gadi, had spoken about Lakpati Didi, and in that about women's participation. I want to highlight the fact that currently 83 lakh SHGs with 9 crore women working across the country with empowerment and also with self-reliance. In this interim budget, I have announced to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. That is also with government assistance. We are going to train them in using very many marketing techniques and also to work with them to make them part of GEM portal or market their goods through any of the ONDCs, or even if they are prepared through the SHG, give them training for using drones which can be used in the farms and the fields in the rural areas. Sir, Shri Santanu Sen, I can't see him here, had raised this question about retail inflation, sir. Retail inflation, I'm glad to say, has declined. In fact, today, one of the newspapers very clearly showed how the cost of thali, a plate of food, has actually come down, and come down particularly for not the vegetarian, but those who have non-vegetarian. So the cost has been calculated, and today the media carried it, but I'm here happy to say that in retail inflation has declined from an average of 6.8% in April-December 22 to 5.5% in the corresponding period of 2023. The RBI also had a monetary policy committee meeting, and even they have been indicating that inflation is coming down and it is well within the tolerance band. This is not the first time they're saying it. Last time they met also, for that period, they did say it. The core inflation has declined from 5.1% in April 2023 to 3.8% in December 2023. Sir, Shri Santanu Sen also spoke about Global Hunger Index. For the benefit of the House, I want to submit humbly, Global Hunger Index is not a balanced approach to measuring hunger. Let's be conscious of it. It is I would like to humbly submit, as much as it is said that you can't doubt those agencies, the very proposition of looking at data given by anybody, just as the data given by Government of India is also subject to peer verification. That is the whole idea of data, observers, economists, statisticians looking at data, just as we can critique government data. Nobody is beyond criticism. Nobody is beyond critiquing. So, now let me finish my answer, sir. I've heard every one of them. Honorable members, sometimes it is so ridiculous, so farcical, that some countries find, according to such calibration, that they are ahead of India, and they are worried. They are surprised. We need to be cognizant of it. How can we allow any organization to calibrate us, generate an ecosystem, generate an impression, and then we have illustrious members with education abroad, indicating to us we must believe in them. Very frankly, this House, I appeal to all the members, this House needs to take
not of the ground reality. We must come out of that servility that any agency, without examining that, will indicate where we are, how we are. My health has to be assessed by my doctor. Someone there will say my health is not good. Sir, this is very dangerous, let me tell you. The honorable member is not here. Mr. Kapil Sibal has found a new role. And the new role is of a journalist. Now, distinguished senior advocate becomes a journalist and then goes to a former governor and then evaluates my health, examines my spine. Though the act, of course, is highly despicable, I do not want to go into it, but can we allow just anyone to engage into these activities? Within the country, we have enough bodies. I do want there must be proper statistical evaluation, a robust mechanism to evaluate our health and economy. But surely we cannot place ourselves in the hands of those bodies. Already enough damage has been done by them. Every time India's rise is there, trust me, do some homework, and you are capable of doing it, ma'am. You will have enough time also after some time. What I mean to say, we must engage objectively. One second, take your seat. Objectively, passionately. I am not looking at it from political partisan prism. We must learn to have our robust mechanism. We will evaluate ourselves and then we'll respond. Anybody, anywhere in the globe, working inspired manner, motivated by someone else, funded by someone else, says it. And we say gospel truth. Sorry. We'll have a debate in the next session on this. We will not have this calibration. Honorable Finance Minister. Thank you, sir. Sir, when I say it is not on a balanced approach to measuring hunger, I'm giving the reasons why. Please. Take your seat. Nothing will go on record, John Bitas. Take your seat. Sir, I'm stating as to why, when I say it's not balanced approach, I'm stating my reasons. The reasons can be rejected. But I, as much as any other member, would also want to place on record, because all of us speak responsibly. We bring in data. It is up to the House to hear it and contradict it or accept it. But please hear first. Sir, it measures multidimensional nature of hunger by just relying on 4 indicators: undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality. It is not a comprehensive index, as 3 of the 4 parameters focus only on children. The sample size of the study is only 3,000 households. IMR, infant mortality rate, is falling in the country from 40 to 40.7 in 2015-16 to 35.2 in 2019-21. This is the NFHS survey. Sample size is 6.37 lakh households. So, we need to also please look at what is the basis with which the study is coming out. Another, as per the NFHS 5, there has been a broad-based improvement in indicators relating to child health and nutrition, with a decline in the proportion of stunted, wasted, underweight children under the age of 5. So, a study which we are doing, and that is based itself on 6.37 lakh households, compared to 3,000 households, we have a reason to question the methodology. And therefore, I'm putting this point out, and I'm sure each one of us, as members who have our own experience in public service, can please look at this and have a peer review done. No objections.
And it is not as if everything which is against the government we would reject. These are data which all of us are going to use. Today, I use data belonging to period when you were in government. Absolutely common thing to do. I have no objections, but my reasons are these. And then, sir, India has adopted a universal food security framework to protect its citizens from hunger through PM Garib Kalyan Anna Yojana. In the BE of 24-25, towards food security, 2.05 lakh crores has been given. This covers 80 crore beneficiaries. They are getting, it is definitely the responsibility of the government. It's not as, oh, I'm giving. No, not in that sense. But we want to be sure that nobody is left out. But sometimes we are critiqued for that as well. Oh, which means you are admitting 80 crore people are poor. Oh, please. You can't have it both ways. The data was then, and based on that, we are giving it. Somebody else's data, which is based on 3,000 household samples, is reliable. But that data which Government of India gives, because it's based on 6 lakh households or more, is not reliable. Anything which is critiquing government is good enough. Anything which is actually telling the truth about the government, rejected. Sorry, hypocrisy nahi chalegi. Ye hypocrisy nahi chalegi. Sir, furthermore, under PM Poshan scheme, in BE 24-25, the amount has been increased to 12,467 crores. The primary objective of the scheme is to improve the nutritional status of children studying in classes 1 to 8 in eligible schools. So that is one thing, sir. There were questions about inflation, how we are managing it. I've been answering questions in this House, but I would just want to highlight that in order to enhance access to food, the government has taken very critical steps. For instance, to make available atta, to make available dal, and to make available onion, and to make available rice. Bharat branded atta, Bharat branded dal, and Bharat branded rice are now available in the market. It's been available for some time. I'll give you the data for it, sir. Bharat atta, 27.50 rupees, meaning 27 rupees 50 paisa per kg. I'm not just saying the number. Till now, 2.37 lakh metric tons have already been sold in the market. People have bought it. As on 28th January 2024. So it's not as if we've made a provision and people are not buying it. People are buying it at that price. To that extent, the prices are cooling down. Bharat dal, 60 rupee per kg for 1 kg pack, or 55 rupees per kg for 30 kgs bag. And in that, 2.97 lakh metric tons as of 31st January 2024 have already been sold in the market. Bharat rice, only launched a few days ago, gives rice at 29 rupees per kg. Onion is being sold at 25 rupees per kg, and even onion, as of 3rd February 2024, 3.9 lakhs metric tons are Honorable already members, sold. now it is 6 p.m. The Business Advisory Committee has already recommended that the House may sit beyond 6 p.m. to transact the business listed for the day. Therefore, the time of the House is extended beyond 6 p.m. till the disposal of the business listed for today. Honorable Finance Minister. So similarly, Tur is being imported, Urad is being imported, just so they have been made free category for import so that our market does not fall short of pulses. And this extension of free category is now available till 31st March 2025. So any trader can import and supply to the market. Similarly, Tur dal, 8.79 lakh metric tons has already been imported in the year 2023, 0.38 lakh million tons in the month of January 2024 itself till January 20th, and they are mainly being imported from Mozambique,
Myanmar, Tanzania, Sudan, and Malawi. We also import but small quantities from Kenya and Nigeria. Now, India also imported masoor dal so that the prices will come down. 15.14 lakh metric tons of masoor from different countries, sir, Australia, Canada, and Russia, in the year 2023, and 0.84 lakh million tons in the month of January 2024 have been imported. Similarly, urad has also been imported. So for the steps that the government has taken to contain inflation and give essential goods at affordable price is through various different means. By branded products which are marketed through NAFED and other mother dairy-like stores, or by open market operations, by releasing grains which are in the buffer stock, or allowing imports to come into this country so that prices can be contained. Sir, on the transfer to states, again, Honorable Member A.D. Singh, Shantanu Sen, and Sri Girirajan, I don't know if they are here, but the reply, I just want to be sure. Devolution, as is recommended by the Finance Commission, is 100% followed by us. There is no way that any violation has happened. I have followed it to the last word. I repeat, whatever was recommended by the Finance Commission has already been given as per time, and it will be given so till the time of the Finance Commission. In BE 24-25, sir, total resources being transferred to states, including devolution to the state share, devolution of the state share from the taxable pool, grants and loans, releases under the centrally sponsored schemes, are all put together expected to be 22,264 crore, which shows an increase of 4,13,848 crore over the actuals of 22-23. This is a 47%. This is 47% of the budget of 24-25. So payments are happening to the states in time, and there is no due held back. I want to be sure that particular data for Kerala and for Tamil Nadu are mentioned here, sir. Tax devolution between 2004 and 14 in crores for Kerala was 46,303 crores. 4 to 14, 10 years, 46,303. That was the transfer to Kerala. Between 2014 and 24, and I'm here talking about figure ending 22nd December 2023, just 2 months ago. 46,303 for the 10 years between 2004 to 14. 2014 to 24, only up to December 2023, 1,50,140 crores. Kerala. The percentage change is 224% increase. That is tax devolution, sir. Grants and aid. And this is open for anyone to see. Transfer are all there. Reserve Bank is monitoring. And publicly, Government of Kerala can release the figure. Is this received or not? So, I'm not just giving a number which cannot be verified. It's been received. Grants and aid from Government of India. 2004 to 14. 25,629.7 crores. 10 years between 2004 and 14. 2014 to 24, Prime Minister Modi, Government NDA, grants and aid from Government of India to Kerala compared to 25,000 something in these 10 years,
1,43,117 crores. So, compared to 10 years of UPA, 9 years of NDA, 458% increase, or 5.58 times increase. So that's aid, grants and aid. Sir, release under the special assistance to states for capital expenditure, which we commenced from 2020-21, because of post-COVID, as I said, we are also having capital expenditure funding given to states, 50-year interest-free. 2020-2021, the first year when we started post-COVID, 82 crores. 21-22, and this, no Finance Commission has asked me to do. Finance Commission has not said, you have to give money to the states for capital expenditure. No. Because the recovery of the economy and sustaining the growth of the economy was very high priority, and Prime Minister's guidance to me was, you should give money for the states to do their own projects. And therefore, the first year was 82 crores to Kerala. The second year, 21-22, was 239 crores. 22-23 is 1,903 crores. So, all this has been released. Kerala received all this. In addition, rupees 18,087 crore have also been provided as additional borrowing to the state in 2020-21 in view of the pandemic. So, this is absolutely clear that there's no reduction for Kerala. I want to humbly submit. Now I move to Tamil Nadu, sir. Tax devolution, 10 years, 2004 to 14, 94,977 crores. 2014 to 24, 2,77,444 crores. I don't know if any member from Tamil Nadu is here. Sorry. क्षमा कीजिए. Sorry, I didn't notice. Sorry. Notice. So 94,977 during 2004-14 is now 2,77,444 as of December 22nd, 2023. We still have months to go. That is 192% increase till December 2023. Now again, the 10-year period, grants and aid from Government of India, 57,924.42 crores during 4 to 14, now 2,30,893 crores. 4 times increase, 300% increase, 10 years of UPA, 9 years of NDA. The release of special assistance for Tamil Nadu. In the first year, they didn't take it. The second year, which is 21-22, 505.50 crores have been given for capital expenditure, interest-free, 50 years, don't worry, servicing it. 2022-23, 3,263 crores have been given again for Tamil Nadu as special assistance, 50-year interest-free. 23-24, the current year, as on 11th December, 2,643.65 crores for capital expenditure, interest-free, 50 years. So Tamil Nadu, Kerala, the figures are before you. It's okay. Come on, Mr. Thambidurai. 1 minute. You are a senior man. Wait a minute. Sir. Please. No, please don't shout and please. Okay. Sir, two things. I want to. Mr. Mullidharan, you are joining them. Sir, I want to first of all, this is the kind of apprehension building. This is. Please. Yeah, please. Mr. Lamaram Karim, Mr. Sir. You are a senior member, sir. Sir. Please. Oh. Please. Sir. Please. Sir, amazing. Sir. Come on. 1 minute. Ma'am, 1 minute. Madam. Sir. There is a problem. You are not on your seat. Even if I want to show indulgence, I can't show.
Sir, No the indulgence one on your thing- seat. Sir, Sir, Honorable Member Elamaram Karim is a very senior member. Very senior member. Yes, I think no dispute on that. Sir, and I have two observations to make before I comment. These are not data which I'm just releasing for the first time in this House. There are parliamentary questions. There are budget documents which are put up. Budget documents have breakdown by states. How much every state got under capital expenditure, 50 years, interest-free, everything is there already. The reason why I'm saying only Kerala is because Kerala, Karnataka, Tamil Nadu have in the course of discussion raised it. If they were interested in it, I don't think it will take much of a time. I'll get it and read it. One. No, they One, can have sir. access to it. Sir, now I give you my comment, if you permit me. These are not amounts determined because I like one state, I dislike the other state. These are the percentages given as per Finance Commission for tax devolution. The same amount, same percentage is used when I have a lump sum which I want to give for 50 years for capital expenditure, interest-free to all states. How do I divide that among states? The formula is the same formula which I use for tax devolution, also for dividing this money, which is purely not Finance Commission's recommendation, but Government of India wants to give. But the formula, Elamaram Karim ji, through you, I request, please John Britta should allow him to hear, I'm answering him. So kindly, sir, Elamaram Karim ji should kindly appreciate, it is not my whims and fancies. Honorable Finance Minister, have you ever invited Ilamaram Karim for a cup of coffee? No, sir. Is there any risk element in it? Sir, I didn't invite, but I was very happy to receive him several times in my room with chai or coffee if they chose, whatever they choose. Karim honorable member has come and met me several times. So now that you are slightly indicating, I'll invite him for a coffee as well. Mr. Karim is cream of the house. Oh. So, I want to dispel this myth, sir. Oh, my state is receiving less, that state is receiving more. I have no role to play in that. It is a number determined by the Finance Commission, which is for tax devolution. The same formula we have taken for something which is not under Finance Commission, which we want to give to the states, but there also we don't want any subjective element. The formulation is as given by the Finance Commission. So why would Kerala get something different from what it gets under the tax devolution, even on this? So comparing Gujarat, please, it's available in public domain. Go see it. Or I can always send it to honorable member. It is the formulation. I have 100 rupees, I have 1,000 rupees, I have 50,000 crores. The formulation is one given by the Finance Commission. Sir, honorable member Randeep Surjewala ji had quite a few issues on agriculture. I'm sure the Agriculture Ministry will be able to give him detailed point-by-point answers, but somewhat some of the questions which he raised, I would want to address it as much as I can. I admit here that maybe some issues I may not be in a position this very minute to answer him. I will request the Minister, Agriculture, to respond to him because those are issues which are very important and we need to answer it. First question, sir. I was surprised that this was raised, but I will answer it. PM Kisan Samman Nidhi. Why is the number originally 12 point some crores? Why was an answer given by the Finance Ministry saying it is 9.5 crores? My number understanding in Hindi, in English, may be a bit distorted, but I'm approximately saying the number that he said. But idea being, you started with 12 crores. One of the parliament replies said 9.2 crore, 9 and 9.5 crore, essay something.
And then there was also this thing about now you're actually paying only 8 point some crores. Essentially, it's trying to say you started with 12, but you're not giving 12. Quite a few has dropped out. In fact, I was carefully listening to him. When you started saying it was 14 crores, then when the last payment was made by Honorable Prime Minister in 15th November 2023, it was 8.93 crores. Then Finance Ministry's response was 12.5 crores. और 3.8 crore गायब हो गया है, उड़ा दिया आपने. If I heard him right, I want to humbly submit that when the 12th installment was given, which is what is probably being referred to as November payment 2023, ceding the data on land was a mandatory condition. In other words, what is the little possession of land that you have on which you're doing the farming? And as a result, only 8.55 crore farmers had ceded the details of their land. As a result, the 12th installment was released accordingly. Second, sir, during the 13th installment, Aadhaar-based payment was made mandatory along with land ceding. There were 8.11 crore farmers who had their land details seeded on the PM Kisan portal, and their Aadhaar was also linked with their active DBT-enabled bank accounts. There are several accounts a farmer can maintain or anybody can maintain, but there is just that one account which is enabled for DBT payment. So during the 13th installment which was being given, the DBT-enabled bank account, Aadhaar linkage, and the land details which are seeded are three of them put into the PM Kisan portal. So the 13th installment was released to them. The eKYC was made mandatory during the 15th installment release of the PM Kisan Yojana, and with this condition, over 8.12 crore farmers received the benefits. So the validation and the checks of land seeding, Aadhaar linking with bank accounts, and the payment to the eligible beneficiaries are an ongoing process. More people doing it, more will get it. To ensure deduplication. So there were several duplication which are now being deduplicated, and weeding off ineligible beneficiaries. That is why you find that the numbers vary, and these are absolutely recorded numbers, which I'd like to, through you, sir, give the honorable member. So then he also had very serious issue about minimum support price, procurement based on minimum support price, actually not happening, and so on. So I just very quickly could rustle up some data, which I will do now, and more information I will have the Agriculture Minister pass on. Sir, during Rabi marketing season 14-15, wheat 1,400 was the price per quintal. During the Rabi marketing season of 23-24, which is the latest, the price, which is for the year 23-24, the price was 2,125 rupees per quintal. The minimum support price for Rabi marketing season 24-25, which is the oncoming on us, is 2,275. So in a matter of 10 years, sir,
from 1,400 to 2,125 to 2,275 is the per quintal price for MSP for wheat. Cost of production, RMS, that is Rabi marketing season, is 1,128. Increase in absolute MSP is 150 rupees. Margin over the cost is 102 rupees. So similarly, I will say for barley, gram, lentils, that is masoor, mustard, and safflower. 1,114.15, 1,735 in 23-24, 1,850 in 24-25. There, the margin over the cost, I'm skipping the first two column, is 60 rupees. Gram, 3,100, 5,534, now it is 5,440. 60 rupees again is the margin, per quintal margin. Masoor, 2,950, now it is 6,425. 89 rupees is the margin over the cost in percentage, I'm saying. Mustard, sir, 3,050, now has gone up to 5,650. 98% margin between these two numbers. And safflower, 3,000 went up to 5,650. Now it is 5,800 rupees MSP for Rabi marketing season. So we have constantly kept pace with the cost increase and kept giving higher MSP for farmers. Sir, I wouldn't be mistaken by you, hopefully, and not mistaken also by the member. I want to say, during the Congress government in Rajasthan, Bajra farmers, because there was no MSP-based procurement in Rajasthan of Bajra at that time, I would want honorable members to recall and correct me if I'm wrong. Rajasthan's farmers with their Bajra packets were going, or bags were going, to Haryana. BJP ruled Haryana for them to be procured. And Haryana government was wondering, where are all these Bajra coming from? Our own Bajra is this much, now I'm having 3 times more Bajra suddenly for procurement. But they didn't send away any farmer without procuring. You are Rajasthan farmer, chali jao. Nahi bola. Procure kiya Haryana ne. Rajasthan Congress Sarkar, Randeep Surjewala ji, I wish he was telling them also this at that time. Procurement nahi hua us samay. और मैं ये भी याद दिलाऊं, किसान के ऊपर आज अगर कोई कांग्रेस वाले बोलते हैं, मैं याद दिलाना चाहती हूं सर, पहले एग्रीकल्चर फार्मर्स बजट हमारे येडियुरप्पा जी ने कर्नाटका सरकार में पेश किया, फार्मर्स के लिए अलग बजट. सो कांग्रेस वाले जरा सोच लें, किसान के ऊपर आज वो क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ का आंसू बहाने वाले अजना करना. सर, हाँ sir, the last point, sir. Yes. There are also MSP prices for others like bajra, jowar, ragi, maize. It's there here. I lay it on the table. I don't want to take more time of the house. Just one more matter. Binay Vishwamji, who I respect, I don't know if he's here. He's gone. But there are other comrades here, so they will hear it and pass it on. No, yeah. Sir, About about Kerala needs to be finances. very punctual because there is a function at my residence. So to keep up that appointment, he may have left a valid ground. Sir, MLAs, ministers, chief ministers made a big show here. Please kindly, what the amount you released to Karnataka, because I am with you, I have to answer there. Sir, I respect Honorable former Prime Minister
No, he is respected countrywide. Of course, and I in my respect home him, sir. constituency of Jhunjhunu, he is known to every household. And he's a farmer himself and has been a very active proponent of millet. Himself has so impacted so many of us because of his ragi mudde. He's very well known for his farmer concerns. Yesterday, I had given a very detailed press meet, sir, all the details about amounts released. I also spoke about it in Lok Sabha, but unfortunately, I didn't think I'll have the time today. You've spoken in so Lok I will Sabha. certainly send it to you even this evening, sir. Okay. So, sir, So I was I- referring to one point about Binay Vishwam, sir. He's not here, but I'm sure the comrades will allow me. He was back again talking about this is Adani government. I want to say again one fact. Virinjam port was given by the Congress people to Adani. Adani is invited even by the Congress in Telangana, new government. But they will never tire themselves by saying, oh, you are Adani, Adani. They invite them, पीछे के दरवाजे से Honorable business Finance होता है. Minister. मगर allegation हमारे Honorable- ऊपर. But communist government, the Marxists who came to power, if they are really so averse to Adani, why didn't they ask him to get out of Virinjam? Project is going on. So that is all right. You put the blame on Honorable BJP, Finance you Minister, put the blame one second. on Congress, but Honorable- you live with Adani. Honorable Finance you Minister. live with Adani. Honorable Finance Minister, 1 second. Honorable Finance Minister. No, 1 second. Yes. Honorable Finance Minister, that narrative decibel is the lowest at the moment. So Okay. you can So I close on shouldn't that. provoke. Yes, yes. Okay. That narrative decibel is the lowest. Nothing will go on record, nothing will go on record now. So, I shall now put the motion regarding consideration of the appropriation vote on account bill 2024 to vote. The question is that the appropriation vote on account bill 2024, nothing has been go record, as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up, nothing else will go on record. We shall now take up close by close consideration of the bill, clauses 2 to 4, and the scheduled stand part of the bill. Those in favor will say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. No, please. Clauses 2 to 4 and schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Nothing has been gone record. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be returned. That the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of appropriation bill 2024 to vote. The question is that appropriation bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the scheduled stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it. The ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2024 to vote. The question is that the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the scheduled eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2024 to vote. The question is that the Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the scheduled eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the Finance Bill 2024 to vote. The question is that Finance Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2 to 13 eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 13 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is returned. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 8th February 2024 has agreed without any amendment to the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 6th February 2024, and has agreed without any amendment to the Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2024, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on 6th February 2024. Papers to be laid on the table, Srimati Nirmala Sitharaman to lay white paper on the Indian economy. Sir, I rise to lay the paper on a white paper on the Indian economy, both English and Hindi versions. Honorable members, tomorrow being the second Friday of the session, private members' resolutions are to be taken up. However, honorable members may be aware that few government bills passed by the Lok Sabha are to be considered by this House. Due to paucity of time, Honorable Minister of Parliamentary Affairs has requested that to enable the government bills to be passed tomorrow, the private members' resolution may be dismissed with tomorrow, Friday, the 9th of February 2024. I hope the House agrees.
Honorable, please take your seat. And Surjewala ji, we will discuss someday. This issue needs to be debated someday. I am not against it, but if you will find out, more than 12% of the time of the House is taken on this. I am sure someday somebody will examine the rationale of it and how efficacious it is. Honorable members, there are 6 permitted special mentions for today. Special mentions of those members who are present now shall be deemed to be laid on the table of the House. No, there is an important announcement to be made. And the House can't conclude without that. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 9th February 2024. I am glad there is some... है। आप इस बिल के जरिए ये कहना चाहते हैं कि 10,000 रुपये से 15 लाख रुपए तक के फाइन भरना और चलते रहिएगा, काम चलाते रहने का। जबकि आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से मंत्री जी कि पोल्यूशन, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और बड़े इसको चिंता का मुद्दा बन गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। और यकीनन आप भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हैं, नेशनल लेवल के ऊपर भी आप भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हैं। कानून तो आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर लोगों के अंदर चेतना होनी चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज इस देश के अंदर एनवायरनमेंट और पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सिर्फ इस इश्यू के ऊपर सेपरेट कोर्ट्स बनाए जाएंगे, लेकिन आज ये ग्रीन ट्रिब्यूनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सिर्फ आपसे अनुरोध ये है कि अब इसका स्कोप भी बढ़ाया जाए और इसके जितने कोर्ट्स हैं इनकी संख्या भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम बिल के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 48(1) जिसके अंदर ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आपने ये कहा है अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कितनी बड़ी होगी, अध्यक्ष महोदय सुनिए, कार्रवाई कितनी बड़ी होगी। उल्लंघन कर रहा है इस एक्ट का तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको अपना सिर्फ 1 महीने की जो बेसिक सैलरी है वो सैलरी देना पड़ेगा। अगर यही तर्क अगर लगाया जाए मंत्री जी, तो कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी कंपनी अगर इसका उल्लंघन करती है तो हमें मालूम है
कि आपके स्टेट बोर्ड जाता है, सेंट्रल बोर्ड जाता है, कोई तो भी एक बेचारा सुपरवाइजर या छोटे मोटे मैनेजर को, अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, तो किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़ी फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन को इसके अंदर क्यों आरोपी नहीं बनाया जा सकता है? वरना आप कहेंगे कि नहीं, आपकी भी बेसिक सैलरी का दे दीजिएगा 1 महीने का और मामला खत्म हो जाएगा करके उसमें। देखिए ये कानून, अध्यक्ष महोदय, एक प्लीज, अध्यक्ष महोदय, मैं पूना से आता हूं मंत्री जी, और ये मुद्दा कोई जाति, धर्म और मजहब के ताल्लुक से नहीं है। मैंने बहुत पॉजिटिव चेंज देखा हुआ हूं। मैं पत्रकार था पहले। जब गणेश का त्योहार आता है महाराष्ट्र में, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं जब कवर करता था तब लोग कहते थे कि नहीं साहब, ये हमारे धर्म से जुड़ा है, विसर्जन गणेश की मूर्ति जो है वो हम नदियों के अंदर ही छोड़ते हैं। लेकिन आपने कोई कानून नहीं लेके आए, उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आज देखने को मिलता है पूना जैसे शहरों के अंदर, मेरे अपने शहर औरंगाबाद के अंदर, कि जहां पर आर्टिफिशियल लेक्स पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं और वो मूर्तियों को उसके अंदर डालते हैं। ये एक सोशल अवेयरनेस का नतीजा है कि यहाँ पर इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरा ये है कि आप हर घर जल दे रहे हैं। एक मिनट जी प्लीज। हर घर जल दे रहे हैं आप, वो जल जो आप दे रहे हैं वो पोल्यूटेड है या नहीं है? आप कहेंगे कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी है तो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की है, महानगर पालिकाओं की है, नगर पालिकाओं की है। आपके पास ये पावर है कि आप देश भर के अंदर अपने स्टेट बोर्ड्स को ये कहिएगा कि पूरे बड़े बड़े शहरों के अंदर, गांवों के अंदर एक मुहिम चलाइए और देखिएगा कि जो जल आप दे रहे हैं हमें, और जिसका बड़ा जमकर प्रचार हो रहा है कि हर घर नल, तो नल के अंदर जो जल आ रहा है वो भी पोल्यूशन फ्री है करके, उसके बारे में भी देखिए। मेरे अपने चुनावी क्षेत्र के बारे में एक बताता हूं। एक हिस्टोरिकल सिटी है औरंगाबाद, अजंता, एलोरा, शिरडी के साईं बाबा के लिए भी लोग आते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से सुबह फ्लाइट उतरती है, बाहर निकलते हैं तो लोगों को अपने नाक बंद करना पड़ता है, क्योंकि औरंगाबाद जो है वो बियर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र हो गया है। बहुत सारी बियर फैक्ट्रीज है एयरपोर्ट के करीब में, तो सुबह इतना एयर पोल्यूशन होता है कि लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। अगर मुझे ये वो आ सकती है तो आपके स्टेट बोर्ड के अधिकारियों ने ऐसी कौन सी दस्ती लगाए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही अनुरोध है। थैंक यू वेरी मच। श्री के नवास्कानी जी, प्लीज बी ब्रीफ, मुझे टोकने की आवश्यकता ना पड़े। நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, நீர் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு திருத்த மசோதா 2024 மீதான விவாதத்திலே பங்கேற்று உரையாற்ற வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாரதிய ஜனதா அரசு மக்களுக்கு எதிரான அரசு, சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிரான அரசு, இயற்கைக்கு எதிரான அரசு என்பதற்கு மற்றும் ஒரு சான்றாக இந்த திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சுற்றுச்சூழல் சிதைக்கப்படுவதை இலகுவாக்கும் இந்த மசோதாவை முற்றிலுமாக எதிர்க்கின்றேன். இந்த மசோதா குற்றங்களை சட்டப்பூர்வமாக்கும் மசோதாவாக பார்க்க முடிகின்றது. இந்த அரசு ஆட்சி அரியணையில் அமர்ந்ததிலிருந்து பல சட்டங்களை நீர்த்து போக செய்து குற்றங்களை இலகுவாக்கக்கூடிய வண்ணம் திருத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது கையிலே எடுத்திருக்கும் இந்த மசோதா மனிதனின் அடிப்படை வாழ்வாதாரத்தை மையப்படுத்தியது. இன்று நீர் மாசுபடுவதை நான் தடுக்காவிட்டால், கடுமையான சட்டங்களின் மூலம் இந்த இயற்கை வளத்தை அழிப்பவர்களை நாம் தண்டிக்காவிட்டால், நாளைய தலைமுறைக்கு துரோகம் இழைத்தவர்களாக மாறிவிடுவோம். இது போன்ற சட்டங்களின் மூலம் குற்றம் இழைப்பவர்களுக்கு நீங்கள் சலுகைகளை வழங்கினால் வரலாறு உங்களை ஒருபோதும் மன்னிக்காது. இந்த மசோதா இயற்கைக்கு எதிராக குற்றம் இழைப்பவர்களின் குற்றத்தின் தீவிர தன்மைக்கும் அதற்கு வழங்கப்படும் தண்டனையின் தன்மைக்கும் எந்த ஒரு பொருத்தமும் இல்லாத அளவுக்கு இலகுவாக்கி இருக்கின்றது. அதனை நீங்கள் அனுமதித்தால் சுற்றுச்சூழலின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றான தண்ணீர் மேலும் மாசுபடுவதை நீங்கள் ஊக்குவிப்பதாக மாறிவிடும். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சட்டத்தின் மூலம் இந்த அரசு வழக்கம் போல அதிகார குவிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சட்டத்தின் மூலம் மாநில அரசினுடைய அதிகாரங்கள் சில பறிக்கப்பட்டு ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படுகிறது. இந்த அரசு இயற்றக்கூடிய அத்தனை சட்டங்களும் மாநில அரசினுடைய உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய, ஒன்றிய அரசின் அதிகார குவிப்பிற்கு கொண்டு வரக்கூடிய சட்டங்களாகவே, சட்ட திருத்தங்களாகவே இருக்கின்றது. நீர் மாசுபடுவதை தடுப்பதும் அந்த குற்றத்திற்கான தண்டனையை வழங்குவதும் இயற்கையை பாதுகாப்பதும் மாநில அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் முழுமையாக இருந்தால்தான் அதில் முழுமையான வெற்றியை காண முடியும். தற்போதுள்ள சட்டப்பிரிவு 21 படி மாநில அரசும் மாநில வாரியங்களும் இதற்கான அதிகாரங்களை பெற்றிருக்கின்றன. ஆனால் நீங்கள் செய்யும் சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் அனைத்து அதிகாரங்களையும் பிரிவு 25, பிரிவு 26, மேலும் பிரிவு 27 ஆகியவற்றில் கொண்டு வந்து அனைத்தையும் மையப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள்.
இயற்கைக்கு எதிரான பிரிவுகள் எல்லாம் நீர்த்தி போக செய்கின்றீர்கள். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மண்டலங்களின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துபவர்களுக்கு வழங்கும் தண்டனை விட அவர்களுக்கு வழங்கும் தண்டனை விலக்குகள் அதிகமாக முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த அரசின் நோக்கம் அட்ஜுடிகேட்டிவ் ஆஃபீஸர் என்ற பதவியை கொண்டு அதன் மூலம் ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இதனை வைத்திருக்க முயற்சிக்கிறது. அந்த அதிகாரி ஒன்றிய அரசின் அதிகாரியோ அல்லது மாநில அரசின் அதிகாரியோ இருக்கலாம் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மாநில அதிகாரி தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரியாக இருக்க முடியாது என்பதை தீர்மானிக்க ஒன்றிய அரசின் முழுமையான ஒருதலை பட்சமான அதிகாரங்கள் இந்த சட்டத்திருத்தின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது. மேலும் இந்த மசோதாவின் பிரிவு 45C படி தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரியின் எந்த ஒரு செயலையும் எந்த முடிவையும் எதிர்த்து நேரடியாக தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணையத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு பெரும் நிறுவனம் செய்யும் நீர் மாசுபடுத்துவதை எதிர்த்து ஒரு சாமானியன் மேல்முறையீடு செய்ய தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணையத்தை நாட வேண்டியது என்பது மிகவும் ஆபத்தானது. ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனத்தை எதிர்த்து ஒரு சாமானியன் எவ்வளவு தூரத்திற்கு செல்ல முடியும் என்ற வரையறையை இந்த அரசு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக ஆகக்கூடிய பெரும் பொருளாதார செலவை நீங்கள் கருத்திலே கொள்ள வேண்டும். எனவே நீர் மாசுபடுவதை தடுப்பதற்கு தனியாக தீர்ப்பாயத்தை கொண்டு வர இந்த அரசு முயற்சிக்க வேண்டும். இந்த மசோதாவில் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய தண்டனைகள் 2 ஆண்டுகள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை என்பது மிகச் சிறிய தண்டனையாகவும் ஒரு தெளிவற்ற தண்டனையாகவும் இருக்கின்றது. இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படும் மனித குலத்திற்கு எதிரானவர்கள் மீது இந்த அரசு இவ்வளவு சிறிய தண்டனை மட்டும் கொடுப்பது முறையானதல்ல. ஏற்கனவே கடுமையான தண்டனைகள் இருக்கும் போதே நீர் மாசுபடுவதை தடுக்க முடியாத நிலை தண்டனையை குறைப்பது சரியாக இருக்காது. பாலித்தீன் வீசுவதிலிருந்து தண்டிக்கப்படுவதாக இதில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒருபுறம் பாலித்தீன் தயாரிக்க அனுமதித்து விட்டு அதை பயன்படுத்தக்கூடாது என்றால் எப்படி முடியும்? இதற்காக தொழிற்சாலைகள் மீது தடை விதிக்காமல் பொதுமக்கள் மீது அபராதம் விதிப்பது சரி கிடையாது. 1986ஆம் ஆண்டு சட்டப்படி எந்த ஒரு நதியிலும் தொழிற்சாலை கழிவுகள் மாசுபடுத்தப்பட்டால் அது மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று உள்ளது. அதன்படி எவ்வளவு பேர் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சட்டம் கடுமையாக அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும். அதுபோல குற்றம் இழைத்தவர்களுக்கு விதிக்கப்படும் அபராத தொகை 20 லட்சமாக இந்த அரசு உயர்த்த வேண்டும் என கேட்டுக்கிறேன். அது மட்டுமல்லாது சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தினால் பாதிப்படைந்த மக்களுக்கு நிவாரணத்தையும் குற்றம் இழைத்தவரிலிருந்து பெற்றுத்தர வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கங்கையை தூய்மைப்படுத்த இந்த அரசு 12,000 கோடி செலவிடப்பட்டது. ஆனால் தற்போது வரை கங்கை நதி மாசடைந்த நிலையில் தான் உள்ளது என்று சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றார்கள். அப்படின்னா இந்த அரசு செலவு செய்ததாக கூறப்படும் 12,000 கோடி என்னானது? கங்கையை தூய்மைப்படுத்த நீர்வரத்தை அதிகப்படுத்தினாலே போதுமானது என்று சொல்கிறார் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் கொண்ட பேராசிரியர் PD திரிபாதி என்பவர். வட மாநிலங்கள் பலவற்றிலும் கங்கை நீர் ஓடுகிறது. ஆனால் பிரதமர் மக்களவை தொகுதி என்பதால் வாரணாசியில் மட்டும் அது அதிக கவனம் பெறுகிறது. கங்கை அரசால் சுத்தம் செய்ய முடியவில்லை என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளது. அதில் ஒன்று மத்திய ஜல்சக்தி துறை சார்பில் சுற்றுப்புற பாதுகாப்பு சட்டம் ஆகஸ்ட் 2021 படி அமைக்கப்பட்ட கங்கை தேசிய பணி NMGC. சார் 2 மினிட்ஸ் சார். NMGC நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா மத்திய அரசின் முக்கிய திட்டமான NMGCக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது. பல்வேறு வகைகளில் கங்கையில் கலக்கும் அசுத்தமான நீர் இப்போ பிரச்சனையை சமாளிப்பதற்காக உத்தரப்பிரதேசம் மதுராவில் சோதனை முறையில் ஒரு திட்டம் அமலாக்கப்பட்டது. இதில் கங்கையின் அசுத்தமான நீரை சுத்தப்படுத்தி மீண்டும் அதை தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்த திட்டமிட்டது. இதனால் என்ன பலன் ஏற்படுது, இது எவ்வளவு செலவானது என்ற நிலையை தெரியணும். வட மாநிலத்தில் கங்கையின் மீதும் காட்டக்கூடிய அக்கறை மத்திய அரசு தென்னிந்தியாவில் காவேரி மீதும் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனவே கங்கை போல் सभापति जी, समय देने के लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं इस जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम के ऊपर बोल रहा हूं और मुझे याद आता है वो दिन जब लगभग 1 वर्ष पहले आप स्वयं हाथ में कुदाल और फावड़ा लेकर के कृष्णा नदी का प्रदूषण दूर करने के लिए लगे थे। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत उसमें अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 3 बातों पर बहुत जोर दिया। शासन में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सब जगह स्वच्छता हो और हम विरासत पर गर्व करते हुए विकास की तरफ बढ़े। और उसी के तहत जब 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, जिस गंगा का जिक्र तरुण गोगोई जी यहाँ पर गौरव गोगोई जी यहाँ पर कर रहे थे, कितने हजारों करोड़ रुपए गंगा की स्वच्छता के लिए खर्च किए। और मैं
इस देश के आदरणीय जल शक्ति मंत्री और आदरणीय मोदी जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जिस प्रकार से गंगा नदी को पवित्र किया गया है, शायद एक भी गंदा नाला आज गंगा नदी के अंदर नहीं पड़ता है। और इस अधिनियम, इसके बिल को लाने के लिए मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, जो बहुत ही पर्यावरण मंत्री होने के नाते जिस प्रकार से पर्यावरण के प्रदूषण की समस्याओं को जिस प्रकार से वो दूर कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय सभापति जी, जैसे मैंने कहा, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, नमामि गंगे नेशनल क्लीन मिशन जो चलाया गया और उसमें जिस प्रकार से हमको सफलता मिली, न केवल गंगा नदी लेकिन उसके जितने भी बेसन की जितनी नदियां हैं सबको साफ करने का एक अभियान चलाया गया। एक हम नया 2019 में नया जो है मंत्रालय बनाया गया। और मैं साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा कि गौरव गोगोई जी जो बात कह रहे थे कि इतना पैसा हजारों करोड़ खर्च किया गया, हमें ये भी बात ध्यान है कि 2004 से लेकर 2014 तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए जो गंगा रिजर्वेशन प्लान बनाया गया, उसके ऊपर भी एक श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है कि वो पैसा कहाँ गया। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने पैसा कितना खर्च किया और उसका परिणाम क्या हुआ, हमने पैसा कहां खर्च किया और उसका परिणाम आज दुनिया के सामने दूध का दूध हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, विशेष रूप से उस जमाने की बात अगर हम करें, कि 3 तरह का प्रदूषण होता है, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण। उन्होंने कहा इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए आदरणीय मंत्री जी यहां बैठे पर्यावरण के लिए, तीनों इन प्रदूषण को अलग अलग हम टैकल नहीं कर सकते। वायु का प्रदूषण होता है, हम कम साधन से उसका दूर कर सकते हैं प्रदूषण। जल का प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अगर जमीन का प्रदूषण हो जाए, जमीन का प्रदूषण करने के बरसों लग जाते हैं। कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि वायु का प्रदूषण करने वाले, जल का प्रदूषण करने वाले या जमीन का प्रदूषण करने वाले लोगों को क्या क्या सजा मिलना चाहिए। इसलिए हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र को भी हमको देखना चाहिए कि उस जमाने के अंदर जो है, जो चाणक्य ने, जो कौटिल्य ने बात कही थी कि उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हम लोग जो है, अगर वायु गंदी होगी, वायु प्रदूषित होगी तो जल भी प्रदूषित होगा। अगर जल प्रदूषित है तो भी वायु प्रदूषित होगा। अगर जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है तो जमीन भी प्रदूषित होगी। इस बात का अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक गृहस्थी का, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो जो जितना गंदा करता है, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े पद पर कोई बैठा हो, रोज जो है पर्यावरण को गंदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि रोजाना यज्ञ करना चाहिए, रोजाना अग्निहोत्र करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता हो कि अग्निहोत्र जो है ये कोई धार्मिक का वो है, ये एक जो है पर्यावरण को साफ करने की, पर्यावरण की सफाई करने की ये बहुत ही वैज्ञानिक एक तरीका है और ये हजारों लाखों वर्षों देश का है। और इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जो है, आप देखो 5 तत्व होते हैं आदरणीय सभापति जी, जो दुनिया बनी है 5 तत्वों से बनी है। पंच तत्व, जल को प्रदूषित कर सकते हो, वायु को प्रदूषित कर सकते हो, आप जो है जमीन को, पृथ्वी को प्रदूषित कर सकते हो, आकाश भी आज प्रदूषित हो रहा है, इतने सैटेलाइट और चल रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो चाहते हुए भी कोई अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता, अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता। इसलिए प्रदूषण दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि अग्नि का प्रयोग करना चाहिए और इसलिए जो है उन्होंने यज्ञ का कहा। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते थे, देवानाम अग्निमुखम, देवों का जब मुख है वो अग्नि है, उसमें अपने को भूख लगाने की जरूरत है। इसलिए हमारे कालिदास ने लिखा है, गुप्त काल में जिसको इस इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं, जिसको गोल्डन एज कहते हैं, उस जमाने में जो इतनी स्वच्छता थी, इतना पर्यावरण साफ था, वो कहते थे कि जमाने के अंदर अगर कोई मलिनता थी, मलिनता हवेर धुर्मेशु, केवल मात्र यज्ञ के धुएं की धुआं था, इसके अलावा। अभी तो 7 मिनट हो गए जी, 7 मिनट्स हो चुके। जी जी जी, हाँ आप सभापति जी। जी जी जी, खैर मैं जी जी आई नो।
जी जी। मूल मुद्दे पर मैं आता माननीय हूँ। सदस्य विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। समय मैं छोटा कर रहा हूँ। जी जी जी। एकदम छोटा कर रहा हूँ, एकदम छोटा कर रहा हूँ। मैं जो मूल समस्या मैं कह रहा था, कहीं हम मेरे से पहले वक्ताओं ने इस बात को कहा, उद्योगों की समस्या है, इंडस्ट्रीज की समस्या है कि उनका प्रदूषण कितना जाता है। हम लोगों ने एसटीपी की बात करी, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत जगह जो एसटीपी चलना चाहिए वो एसटीपी नहीं चलता। दिन में एसटीपी चलता है, रात को एसटीपी बंद कर देते हैं। इंडस्ट्रीज विशेष रूप से केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा की इंडस्ट्री है, शुगर की इंडस्ट्रीज है, पेपर की इंडस्ट्रीज है, वो पेपर की इंडस्ट्री पानी को बहुत जो है उसको प्रदूषित करती है। हमारे जो है घरों की गंदगी, जो है तालाब की कुछ बात करते हैं, गांव-गांव में तालाब जिस प्रकार से आजकल गंदे हो गए हैं और घरों की गंदगी उसके अंदर जाती है, वो भी उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड किसने जिक्र किया है, आज जो है जमीन को किस प्रकार से ओझ कर रहा है। जैसे मैंने कहा, अगर जमीन प्रदूषित होगी तो जल भी प्रदूषित होता है, उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। मर्द शरीर को कुछ जगह जो उसको करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, मैं आदरणीय यहाँ पर मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, स्टेट कंट्रोल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की हम बात करते हैं, या सेंट्रल जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये प्रैक्टिस में बात देखी गई है कि हमारे जिस प्रकार से जो इंडस्ट्री जो है जो प्रदूषित करेगा जल को, उसके लिए हम लोगों ने सजा का प्रावधान किया है। लेकिन हमारे अधिकारी जिनकी कन्नाइवेंस है, अमरोहा का यहाँ पास के अंदर एक बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है, उसका पानी जिस प्रकार से, उसका डिस्चार्ज जिस प्रकार से जमीन के अंदर जाता है, इन पे भी हमको देखने की जरूरत है। कई बार डेटा जो फर्ज किए जाते हैं, इसको जो है हमको ध्यान, और इन ऐसे मैं लगता है कि हमारे इस कानून के अंदर इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात जो है बागपत की बात करना चाहता हूँ। हमारे हिंडन और कृष्णा नदी, आपको ये बात मालूम है, 6 जिलों के अंदर 122 गांव में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि इतना जो है, इतना ग्राउंड का जो वाटर इतना कंटामिनेटेड हो गया है, लोगों के अंदर अलग अलग तरह की बीमारी फैल रही है। उसके ऊपर वहाँ से जो है वहाँ के नलकूप जो है जिसको बोलते हैं हैंडपंप उखाड़े जाए, वहाँ पर पर्याय व्यवस्था की जाए। इस पर भी हमको जो है ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आदरणीय असवाद, एक मिनट कह के अपनी बात कह देता हूँ, जितने भी प्रदूषण दुनिया में है, सबसे बड़ा प्रदूषण अगर दुनिया के अंदर है, उसको मैं कहता हूं माइंड का पोल्यूशन है, मन का प्रदूषण। जी जी। और इसलिए तो गड़बड़ हुआ है। अरे 60 साल में उन्होंने जो इतना प्रदूषण किया है, 60 साल में जितना प्रदूषण किया, उसको भाई निकालने के लिए समय तो लगेगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब प्रदूषणों का इलाज करना चाहिए, लेकिन माइंड का प्रदूषण का सब कुछ इलाज करें। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जहां हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें ध्यान दें, हमारे संस्कारों पर ध्यान दिया जाए। जी मेंटल हेल्थ, ठीक है आदरणीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं बहुत। श्री गुरदीप सिंह औजला जी, प्लीज 2 मिनट्स, टेक केयर जी। थैंक यू सर। सर, वाटर अमेंडमेंट बिल 2024 स्टेट गवर्नमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के उत्ते बोलने का चेयरमैन साहब तुसीं मौका दिता, धन्यवाद। 10 मिनट। स्पीकर साहब, जिहड़ा जमीन के उत्ते पोल्यूशन है, खासकर जिहड़ा पानी का पोल्यूशन है, ये इंडस्ट्री तो भी हुंदा है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन तो भी हुंदा है, रेजिडेंशियल भी है और डेयरी का भी है। असी गल कर रहे थे कि ये जिहड़ा पोल्यूशन के उत्ते तुसीं सज़ा का प्रावधान खत्म करके जिहड़ा जुर्माना ला दिता, एक तरह के नाल जिहड़ा इंडस्ट्री वाला उन्होंने खुल दे दी कि तुसीं जिथे मर्जी पानी पा लो। अज पंजाब दे विच बुढ़ा नाला लुधियाने दे विच है, सतलुज दरिया, ब्यास दरिया, शरेआम फैक्ट्रियां का पानी उन्हां च पै रहा। साडे अमृतसर तुंग ढाब ड्रेन, भगता वाले नाला पा कौन रहे ने? म्यूनिसिपल कारपोरेशन, पोल्यूशन डिपार्टमेंट उत्थे है, पोल्यूशन मिनिस्ट्रियां उत्थे ने, पर कोई बंदा उन्हां ते कंट्रोल नहीं करता। अज उस मिनिस्ट्री नूं चंगा समझिया जांदा जिहदे कोल बहुत ज़्यादा बजट होवे। क्यों? क्योंकि उत्थों माल खाना हुंदा है। अज पोल्यूशन दी मिनिस्ट्रियां, अज एक स्टेटस बन गया कि पोल्यूशन दी मिनिस्ट्रियां हुंदियां ने। क्यों? जे वो काम ही करते होण, अज ये गंदे नाले ना होण साडी धरती दे उत्ते। असीं दिल्ली दे विच जदों अज जाने हैं, तुसीं दिल्लीओं बाहर चले जाओ, पहाड़गंज दे लागे किन्ना गंदा नाला है, मुंबई एयरपोर्ट तो बाहर निकलो, तुहाडे कोल नक नहीं दिता जाता। असीं इन्हें 10 साल च असीं गंगा साफ कर दित्ती, यमुना साफ कर दित्ती, पर मैं कहना चाहुंदा है जिੱਥੋਂ पोल्यूशन आउंदा ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ 8.9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬਿਕ ਦਿਓ।
उस समय दे विच जिहड़ा पानी सी साडी बहुत सी उदों उस हिसाब नाल लगदा सी, पर अज पानी पंजाब च बहुत घट गया। सर मैं कहना चाहुंदा सर इहदा ही विषय है, सर इहदा विषय NGT उहदे च दखलअंदाजी करे। और मैं कहना चाहुंदा सर मैं तैयार एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर एक मिनट सर मैं कहना चाहुंदा तुसीं एक जिन्ने भी साडे गंदे नाले ने पंजाब दे, खास कर जिहड़ी भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम नूं डीसिल्ट जरूर कराओ भाखड़ा डैम दे, क्योंकि उहदे ते बिल्कुल नदियां भी जिहड़ियां ने माइनिंग दे ना होण करके नदियां भी सारियां रेतां नाल भरियां पईयां ने। 1700 करोड़ का प्रोजैक्ट है, क्योंकि उहदे नाल पोल्यूशन ज़्यादा वधदा है, क्योंकि जिन्ने भी इन्हां नूं खाली नदियां होण करके जिन्नी इंडस्ट्री है सारा पोल्यूशन का पानी उन्हां दे विच पाउंदी है। सो मैं तुहानूं कहना चाहुंदा जिथे इत्थे सख्त सजावां दा प्रबंध किया जाए, उत्थे स्टेट नूं होर अधिकार दिते जाण। स्टेट कोल कोई अधिकार नहीं है। मैं चेयरमैन साहब तुहाडा धन्नवाद करदा ते स्टेटां दे अधिकारां नूं खत्म ना किया जाए ते सख्त सजावां कीतियां जाण जिहड़े पोल्यूशन कराउंदे ने। धन्नवाद। Opportunity to speak on this important legislation. Sir, since 1974, when the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted, no comprehensive efforts have been made till date to address the loopholes in the laws vis-a-vis the present challenges. The primary objectives of this act were to provide the prevention of water pollution, cater to the maintenance and restoration of water bodies. However, the act suffers from various drawbacks. It is silent about the groundwater management policies and fails to deal with the indiscriminate tapping of groundwater. Over the first few decades, the country has seen rapid urbanization and industrialization, causing pollution loads, which are higher than ever. Subsequently, the quality of Indian water bodies has declined drastically, and many water bodies have been lost or have shrunk considerably due to encroachment or pollution-induced eutrophication. Therefore, this amendment bill is very relevant. Under the Indian Constitution, the judiciary has included the right to clean water and environment under the ambit of Article 21, 48, and 51G of the Constitution of India. The court has observed that right to clean water is a part of the basic necessity of human lives to life, and state is duty-bound to prevent the water from getting polluted. In the leading case of MC Mehta versus Union of India, the court held that preventing the water of river Ganga from being polluted was the need of the hour. In 2021, Parliamentary Standing Committee on Water Resources had lacked the fact that as many as 48,900 rural habitations were affected by water contamination due to arsenic, fluoride, iron, nitrates, heavy metals, and high salinity. The parliamentary panel recommended that the department focus its attention on these habitations. On these backgrounds, Amendment Bill seeks to find remedies in existing law. Firstly, the bill intends to streamline the appointment of the key officials of the state board. The second major amendment is to decriminalize the penal provisions, allowing the citizens and businesses to function without fear of imprisonment for minor technical or procedural errors. I welcome these provisions on behalf of my party, Biju Janata Dal. In this regard, I would like to say that we should not stop with this legislation. We should be proactive so far as protecting our water bodies is concerned. Odisha state government, under the able leadership of Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, has initiated the process to set up a state water informatics center, SWIC, a body dedicated to handle and monitor water resources, data from flood water, groundwater, surface water, and rain water, among the others. The state government is also actively working on the rolling out safe drinking tap water supplies. Water Corporation of Odisha, WATCO, an ISO-certified Government of Odisha-owned not-for-profit company, started its journey with only 3 numbers of ULBs in 2019. By March 2023, it is now operational in 29 ULBs, covering more than 65% of total urban population of the state towards drinking water supply and sewage management. It is likely to cover all the 115 ULBs of the state in the following years. Sir, there is an urgent need for preventing our streams, reservoirs, rivers, lakes from being polluted. If the systemic weaknesses associated with the governance structure are not addressed, there is not going to be any benefit from any amendments. India needs a robust monitoring and enforcement system that can detect and arrest pollution at the source. The government must ensure strong, transparent, and accountable mechanisms that strengthen the policy and achieve its objective. Thank you, sir. With this, श्री निहाल words, चंद I जी, conclude. कृपया संक्षेप में।
धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जल हम सब के लिए कितना उपयोगी है हम जानते हैं। हम सभी के जीवन में जल बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिवेश में जल संरक्षण और जल प्रदूषण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। केंद्र की सरकार ने इस बिल के माध्यम से इन दोनों मुद्दों को स्थायी समाधान की एक नई दिशा दी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस बिल के द्वारा प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करके इसे जल के क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं के उचित समाधान हेतु पहले से ज़्यादा कामगार बनाया है। सभापति जी, इस अधिनियम के अनुसार चाहे उद्योग हो, चाहे संयंत्र की स्थापना हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की पूर्व सहमति आवश्यक है। इसके लिए जल निकाय सीवर या भूमि सीवरेज का निर्वस्त ही होने की संभावना है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। नए विधेयक के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष की सेवा और शर्तों को मनोनीत करने के लिए केंद्र सरकार इसके लिए निर्धारित करेगी। यह विधेयक के अंतर्गत जलाशयों के लिए प्रदूषण तत्व छोड़ने से जुड़े हुए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अध्यक्ष जी, यह विधेयक कितना जरूरी है, मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि केंद्र की सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर पंजाब को सतलुज नदी को साफ करने के लिए उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 774 करोड़ रुपए की राशि दी है। पूरी सतलुज का जो नहर है, सतलुज कैनाल है, जो नदी है, सतलुज नदी है, उस पर एक भी एसटीपी प्लांट लगा नहीं। एनजीटी ने बार बार आग्रह करने के बाद भी पंजाब सरकार ने प्लांट लगाया नहीं। जब आपकी सरकार थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ और अब की भी मैं बात कर रहा हूँ, और एक भी प्लांट नहीं लगने की वजह से पूरा सतलुज का पानी खराब हो रहा है। एक शुगर मिल वहाँ पे बनी हुई है, उसका एक बार वायरल फटा अध्यक्ष जी। इतना प्रदूषण हुआ कि सारा का सारा केमिकल युक्त गंदा जो उसका पानी था वो इस कैनाल में आ गया, नदी में आ गया, और सभापति जी नदी में आ गया, और वहाँ की नदी की सारी मछलियाँ सारी की मौत हो गई, और उसका पानी पूरा राजस्थान के कैनाल राजस्थान पीता है। आज राजस्थान के अंदर गंग कैनाल, भाखड़ा और राजस्थान कैनाल तीनों का पानी हम लोग पंजाब से ले रहे हैं। और पंजाब में जितने भी सीवरेज के प्लांट लगे हैं, एक प्लांट पर भी एसटीपी का काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो यह कानून इसलिए बना है कि उनको पाबंद करने के लिए कि किसी भी स्टेट को शुद्ध पानी मिले। धारा 25 और 27 का जो इसमें लगाया गया है, उसमें और ज़्यादा कठोर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सभापति जी, मैं कहना चाहूँगा, मैं आपका 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं इस बिल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे राज रहा है, तो दिल्ली में एक साहिबा नदी थी, वो आज नाला बन के रह गई है। दिल्ली में मुंबई में एक मीठी नदी थी, वो आज नाला बन के रह गई है। चेन्नई एक ऐसा जगह है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 1000 फीट तक नीचे तक कोई भी पानी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस बिल के माध्यम से हर 9 में से 1 व्यक्ति को पीने का पानी जो असुरक्षित स्रोतों से मिलता है, उसको अगर उसको ठीक करने का काम करेगा, तो यह आपका जो बिल है, जो आज बिल आ रहा है, यह काम करेगा। और 90% सीवरेज जो जल निकायों के से प्रभावित किया जाता है, इसको ठीक करने का काम करेगा। तो आज का यह अधिनियम, बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म, 2 ही मिनट में, बस 2 मिनट में, हर दिन 2 मिलियन टन सीवरेज और अन्य जो जल निकायों में छोड़े जाते हैं, उसको भी यह ठीक करने का काम करेगा। हर साल उद्योग और अनुमानित 300 से 400 मेगाटन कचरा जो निकायों में छोड़ा जाता है, उसको भी यह ठीक करेगा। सभापति जी, मैं ज़्यादा बात नहीं करके मैं इतना कह सकता हूँ कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो CPCB के अनुसार 61% शहरी सीवरेज के बिना उपचार की नदियों और अन्य निकायों को छोड़ दिया जाता है, उसको अगर ठीक करने का कोई काम करेगा तो ये बिल करेगा। और CBC के अनुसार भारत के 276 जिले हैं, उसके जो नीचे का जो पानी है, जो पानी में फ्लोराइड, आर्सेनेटिक, नाइट्रेट उसमें आ गया है, उसको अगर ठीक करने का कोई काम करेगा। इसलिए सभापति जी महोदय, इस बिल का होना बहुत जरूरी है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस महत्वपूर्ण विधेयक पे
21 सदस्यों ने भाग लिया और सबने जो चिंता जाहिर करी वो पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना और विषय को लेकर के चिंता जाहिर करी। मैं सबसे पहले इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। ज़्यादातर सदस्यों ने जब इसके विरोध में भी बोला तो उनके मन में एक संशय था। वो संशय ये था कि क्या इस बिल के माध्यम से हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रावधानों को कमजोर तो नहीं कर रहे? क्या ये बिल फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर तो नहीं कर रहा? मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को ये बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और संघीय ढांचे की बुनियाद को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और दोनों ही विषयों का हमने इस बिल में पूरा ध्यान रखा है। लेकिन जो 74 में जो कानून हम लेकर के आए, इस कानून में एक प्रोविजन ऐसा कर रखा था जो साधारण प्रकृति के भी जो उल्लंघन थे या जो सामान्य प्रकृति के भी उल्लंघन थे उसमें भी सजा का प्रावधान था। हम लोग गरिमापूर्ण जीवन के लिए ये तो ठीक है कि सभी लोगों को अवसर दें, लेकिन अवसरों को कानूनी मकड़जाल से भी निकालना चाहिए। अब जैसे धारा 20 में प्रावधान था कि अगर जल निकासी से संबंधित जानकारी आपने अपने फॉर्म में नहीं भरी तो आपको जेल का प्रावधान है। धारा 32, 33, 33A के अंतर्गत जारी आदेशों का उल्लंघन, जो यद्यपि सामान्य प्रकृति से थोड़ा हो सकता है, लेकिन हर चीज में कोर्ट में जाना, और कोर्ट में जाना मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कितना एप्लीकेशन को लगाना पड़ता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। और इसलिए हमने जो जानकारियों के सामान्य विषय हैं उनको कोर्ट के सजा के प्रावधान से निकाल करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते हमने उस पर दंड लगाने का प्रावधान किया है। अभी फिर लोगों के मन में ये प्रश्न आया, प्रतिमा मंडल जी भाषण दे रही थी तब वो ये विषय उठा रही थी कि इसमें नॉन कंप्लायंस होगा। सामान्यतः ये कहा जाता है जब न्याय मिलने में, कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, पर वास्तव में देर अपने आप में ही अंधेर है। देर भी क्यों होनी चाहिए? जो भी प्रक्रियाओं का अगर पालन नहीं किया है तो डीक्रिमिनलाइजेशन से कानूनी डर केवल जेल दिखा देने से डर नहीं है। हमें अगर ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग है तो लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। लोगों को कानून के साथ चलने के लिए एक भावना जागृत करनी पड़ेगी और इसलिए हमने इस पे केवल पेनल्टी का प्रावधान किया। पेनल्टी के प्रावधान पे जब चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों को लगता है कि इसमें अधिकारियों को शक्ति तो नहीं आ जाएगी या पेनल्टी का मनमाना प्रयोग तो नहीं करेंगे, या गोगोई जी कह रहे थे कि आप रूल्स बताइए। आप तो पुराने सांसद हैं, संसदीय प्रक्रिया को जानते हैं, आपको पता है कि कानून के द्वारा संसद सरकार को शक्ति देती है और अगर रूल्स भी हम कोई लेकर के आएंगे तो वो भी संसद से बाहर कैसे ला सकते हो? तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता ही है, उसकी प्रक्रिया है ही। पर आप हर बार अगर छोड़ के वॉकआउट करके हंगामा ही करते रहोगे तो प्रक्रिया पढ़ने का आपको भी समय कब मिलेगा? प्रक्रिया पढ़िए, प्रक्रिया के अनुसार जब सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन रखा जाता है उस समय भी विषय रखा जाता है। लेकिन मैं ये पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी नियम इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे उसमें पूरी जांच पड़ताल, अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके जो एविडेंस हैं उसको पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई के अवसर दिए जाने के हमारे रूल्स में पूरे तरीके से प्रावधान किए जाएंगे।
और इसलिए जब रूल्स में ये प्रावधान किए जाएंगे तो ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है कि ऐसे रूल्स बनाने के बाद फिर भी अगर किसी को ग्रीवेंस है तो उसके अपीलेट राइट होने चाहिए। कोई भी कानून को जब हम बनाते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के बाद फिर भी किसी व्यक्ति को अपीलेट अथॉरिटी में जाने का अवसर होना चाहिए, और इसलिए अपीलेट अथॉरिटी में जाने का अर्थ ये है कि इसका अपीलेट अथॉरिटी का अधिकार एनजीटी को देने का काम किया गया है। एडजुडिकेटिंग अधिकारी जो है वो भी जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर के बनाने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि कोई भी देश में जब भी प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन को संभालते हैं तो वो एसडीएम, डीसी, डायरेक्टर लेवल पे आने के बाद जब जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पे आते हैं तो एक तरीके से उनके अंतर्गत उनकी प्रशासनिक क्षमताओं में अपीलेट बॉडी की पूरी तरीके से क्षमता की जाएगी, और उनकी जब अपीलेट को चीज़ें डिसाइड करने की क्षमता होती है, इसलिए अधिकारी का चुनाव हमने इसके अंतर्गत जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का करा है। फिर ये प्रश्न उठता है कि जब आपने पूरी तरीके से डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो फिर एक सेक्शन को क्यों छोड़ दिया। हमारा ये मानना है कि कानून का पालन करने के बाद सभी लोगों को उसको पूरी तरीके से लागू करने का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कानून ही अपने हाथ में ले ले। उसको कम से कम अपने कोई भी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, जब वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का या ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन करता है तो उसको अपनी पूरी क्षमताओं को देना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिना सरकार की जानकारी के, बिना कंसेंट टू ऑपरेट के अपने आप ही इंडस्ट्री शुरू कर दे। ऐसे विषयों को केवल हमने सजा के अंतर्गत रखा है। फिर एक विषय कथिर आनंद जी डीएमके के बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप तो राज्य के जो स्टेट के जो पॉल्यूशन बोर्ड हैं उसको गाइडलाइन दे रहे हो, आप उनके ऊपर फोर्स कर रहे हो, उनके चेयरमैन कौन होंगे वो फोर्स कर रहे हो। ऐसा नहीं किया जा रहा है, केवल एक गाइडलाइन और मानक तय किए जा रहे हैं। आखिर देश में हम ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग का काम करना चाहते हैं, और देश में सब जगह स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कोई पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जरूर है, लेकिन हमें अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कॉम्पिटेंट लोग, एक स्टैंडर्ड के लोग, एक योग्यता वाले लोग, केवल मनमाने तरीके से नहीं, अगर उसका एक समकक्ष, एक समान प्रावधान होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ही सेक्टर में और एक ही जगह क्यों नहीं होना चाहिए, पूरे भारत में हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहिए और उस स्टैंडर्ड के लोग आने चाहिए। तो हमने केवल मानक तय करे हैं कि जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे उनकी योग्यता ये होनी चाहिए। उस योग्यता में नियुक्ति का अधिकार तो राज्य सरकारों को ही रहने वाला है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन करने का विषय है। फिर गोगोई जी कह रहे थे कि आप किसको एग्जेम्पशन करेंगे। हम कुछ इंडस्ट्री जो केवल ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं उसको, उसके लिए उनको एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन वो एग्जेम्पशन भी पूरी तरीके से नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। वो एग्जेम्पशन मनमाना नहीं है, यही तो रूल्स है और यही हमारा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। एक आशंका और उठती है और कई सदस्यों ने अपनी बातचीत में भी ये कहा कि ये जो फाइन आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। हमारी सरकार पूरी तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करती है। जो भी पैसा आएगा उसका 75% पैसा पुनः राज्यों को ही दिया जाएगा और राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि ये जो पैसा आया है, जो नियम है उसके अंतर्गत, विधि अपने नियमों के अंतर्गत उस पैसे को वो अपने राज्यों में लगाने का विषय, उसको आगे बढ़ाएं। फिर विषय होगा कि जब इतना अमेंडमेंट करने के बाद तो हम इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म को कैसे आगे ले जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस मैकेनिज्म के साथ जो हमने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो प्रावधान करा है, उस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को ये पावर होगी कि वो रेगुलेशन वगैरह निकालें। प्रेमचंद्रन जी हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं और वो कह रहे थे कि आपने तो ये बताया ही नहीं कि किन राज्यों ने पास करा, कब पास करा। मेरे को लगता है कि वो तो सबसे ज़्यादा बिल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और बिल जब उन्होंने पढ़ा होगा तो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल का है उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, एंड वेयर इन परजुएंस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीड विथ क्लॉज 2 देयर ऑफ, रेजोल्यूशन हैव बीन passed by the legislative assemblies of state of Himachal Pradesh and Rajasthan to the effect that the said act should be amended by an act of parliament for the purpose of herein after appearing। तो इसमें तो लिखा है, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है और अभी पास किया उन्होंने दिसंबर में,
राजस्थान में भाजपा की सरकार है। इसका अर्थ ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। राज्य सरकारों को भी कांग्रेस की सरकार के टाइम किया था उन्होंने, अभी किया, अभी किया जी, इसी बजट सेशन में पास किया। ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। राज्य सरकारों को भी पता है कि कंसेंट टू ऑपरेट के लिए किस प्रकार की परेशानी आती है, इंडस्ट्रीज को किस प्रकार की परेशानी आती है। ये ओवरऑल जो वाटर का जो मेंटेन करने का जो विषय है, जैसा हमारे जो पंजाब के हमारे गुरजीत जी बात कर रहे थे, वो मुख्यतः वाटर मिनिस्ट्री का विषय। यहाँ केवल वाटर के पॉल्यूशन के संबंध का जो विषय है उतना ही हमारा लिमिटेड विषय है, और इसलिए ये सब राज्यों के द्वारा एक लंबे समय से मांग की जा रही थी, और इस मांग को पूरा करते हुए ही हम लोगों ने इस विषय को आगे बढ़ाया है। मैं माननीय सांसदों को कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण एक बड़ा विषय है, और जैसा कि हमारे सुप्रिया जी बोल रही थी कि हमें एआई होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि एआई से ज़्यादा ईक्यू होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन ईक्यू का अर्थ है जब तक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस हमारे दिल में नहीं आएगी, एआई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देश के स्कूलों में, देश के कॉलेजों में एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईसी होनी चाहिए, कॉशन से ज़्यादा कॉन्शियसनेस सी होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ का मंत्र दिया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, एडेप्टेशन मेजर्स भी सोसाइटी के द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो एनवायरनमेंट को बचाने का जो विषय है वो इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा वो है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस कंजम्पशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये बहुत बड़ी विषय है, और इसलिए जल प्रदूषण केवल इंडस्ट्री के कारण नहीं है, माइक्रो प्लास्टिक के कारण, गाँव के तालाबों के प्रदूषित होने के कारण, जैसा कि हमारे संभाजी नगर के सांसद बता रहे थे इम्तियाज अली, उनके यहाँ पर बियर फैक्ट्री का विषय में पानी की दुर्गंध का कारण कह रहे थे, इंडस्ट्री द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा पानी लेने के कारण, जल प्रदूषण की मॉनिटरिंग और वेस्ट पर नियंत्रण के कारण। मैं माननीय सदस्यों की जो ये चिंताएं हैं, ये वास्तव में एक सामान्य नागरिक की भी चिंता है। मैं उसका सम्मान करता हूँ, उससे अच्छे से वाकिफ़ हूँ, और इसके लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा जो विशेष रूप से कार्य किया गया है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को रिवाइज और हम अपडेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर भारत सरकार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत भी बहुत बड़े फंड का प्रावधान किया गया है, और ये गंगा जी के बारे में भी और बाकी जगह के बारे में जो आप बता रहे हैं समस्या, उसके लिए लिक्विड डिस्चार्ज से संबंधित रूल्स पर भी हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। आने वाले समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जल प्रदूषण को और भी कारगर तरीके से रोक पाएंगे। विशेष रूप से शमशान भूमि के आसपास नदियों में होने वाले प्रदूषण के लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं, और जागरूकता फैलाने का प्रश्न है तो हम मिशन लाइफ के लिए काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा है कि पिछले दिनों 2014 में जब से नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, गोगोई जी ने बार बार उसका उल्लेख किया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्लान तैयार किया है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज उसको विषय को कर रही है, लेकिन उसमें भी मॉनिटरिंग ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी, परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान एक्सेट्रा जो विषय हैं उसको पूरी तरीके से लागू करने का विषय किया है। एक विशेष योजना जो सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन से लेकर के जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई अभियान, अटल भूजल योजना मिशन को तो किया ही है, लेकिन आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत सरोवर के एक विशेष अभियान को दिया गया था। हर जिले में 75 अमृत सरोवर की बात की गई थी। अमृत सरोवर के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ, और 1,09,000 ऐसी वाटर बॉडी आइडेंटिफाई करी है, और भारत दुनिया के साथ भी कदम से कदम मिला करके चल रहा है। यही कारण है कि दुनिया में अच्छी झीलों के संरक्षण के लिए जो रामसर साइट्स की जो कन्वेंशन है, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज़ादी के जब 75 वर्ष हुए तो हमारे देश की 75 जो हमारी लेक्स हैं
उनको हमने रामसर साइट्स का दर्जा दिलाया। और इस बार तो 2 तारीख को जब वर्ल्ड वेटलैंड डे हुआ तो इंदौर शहर को हमने वेटलैंड सिटी के रूप में दर्ज कराया। ये वेटलैंड हमारे देश के जल संरक्षण, जल के धरोहर को बचाने के लिए, फ्लड से किसी भी शहर को बचाने के लिए, आपके आसाम में गुवाहाटी के पास जो दापोली बिल है, पूरा ब्रह्मपुत्र के पानी का जो पूरा लेक का जो वाटर का एरिया बनता है, वहाँ पे भी विशेष रूप से कार्य करने का काम हम लोग कर रहे हैं। बंगाल में भी कर रहे हैं, पूरे देश भर में कर रहे हैं। पर ये जो पूरा बिल है, ये जल के प्रदूषण में इंडस्ट्रीज़ को हमने जो जकड़ के रखा था, उस जकड़न को निकालने के लिए हमने एक ईजी वे दिया है। मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा बिल है जिसके द्वारा हम कोई इंडस्ट्री को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, हम देश में रोजगार बढ़ाते हुए ईज़ ऑफ लिविंग के मानकों को हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो गलतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जल संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए होल ऑफ द गवर्नमेंट की जो अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, सभी मंत्रालय मिलकर उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप सबका समर्थन इस बिल को मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अधीर रंजन जी कुछ क्लियरिफिकेशन चाहते हैं आपके मित्र। सर ये दो तीन बातें। भूपेंद्र यादव जी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर मैं गीता की एक बात कहते हैं, गीता में लिखा गया कि ऑफ ऑल प्यूरिफायर्स आई एम द विंड, ऑफ ऑल वेल्डर्स ऑफ वेपन्स आई एम रामा, ऑफ ऑल फिशेस आई एम शार्क, ऑफ ऑल फ्लोटिंग रिवर्स आई एम गंगा। तो एक गंगा को अविरल निर्मल के लिए 2022 एक मकसद रखते हुए, एक ऑब्जेक्टिव रखते हुए ये सरकार ऐलान किए थे कि कोई म्यूनिसिपल वेस्ट, कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ये गंगा में नहीं गिरेगी बाय द ईयर 2020। अब आ गया 2024, 32,000 करोड़ बजट आउटले हो गए। और इसके बाद क्या नतीजा निकला कि 71 मॉनिटरिंग स्टेशन पे फीकल कॉलीफॉर्म ये परमिसेबल लिमिट से बाहर, और बाकी बीओडी छोड़ ही दीजिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन छोड़ दीजिए। ये जल संसाधन का मामला नहीं सर, ये सर ये सब उन्होंने ये बताया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 32,000 करोड़ खर्चा तो हो गए, 2024 साल भी गुजर जा रहे हैं और अभी गंगा सारे दुनिया में 5th पॉल्यूटेड रिवर बन के रह गए हैं। 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन, ये हमारे 40% आबादी गंगा के पानी की इस्तेमाल करते हैं। सब हम गंगा गंगा करते हैं, लेकिन गंगा मैली के बाहर नहीं आ पाते। दूसरी बात यह कि ये बिल के मुद्दे पे हम यही कहना चाहते हैं भूपेंद्र यादव जी कि क्लॉज 4 ऑफ द बिल ग्रैंड स्वीपिंग पावर्स, हमारा आपत्ति इसमें है, ग्रैंड स्वीपिंग पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू exempt certain categories of industrial plant from the requirement of obtaining consent from SPCB. This move undermines the crucial role of SPCB in regulating industrial activities to prevent water pollution. By allowing exemption, the bill risks compromising environmental protection standard and potentially exacerbating pollution levels. Clause 5 of the bill enables the central government to issue guidelines on matters related to the grant refusal or cancellation of consent by SPCB. This provision certainly centralizes decision-making authority, diminishing the autonomy of SPCB. This is my contention. Thank you, sir. बोलिए आप। अधीर रंजन जी ने 2 प्रश्न उठाए हैं। सही आपने भगवत गीता का उल्लेख किया है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में मैं माघ मास हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। ये हमारा कितना डीप रूटेड प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ एक एकात्म को दर्शाता है। और आप तो गंगा नदी के किनारे ही रहते हैं, भागीरथी के किनारे ही हैं आपके गांव में। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरीके से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्ध है। जहाँ तक हमारे मंत्रालय के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ फॉर्मुलेटेड charter-based participatory approach to facilitate the industries for water recycling and pollution prevention in major industrial sectors like pulp and paper, sugar, distillery, textile and tannery in river Ganga mainstream
state emphasizing on technology upgradation, waste management practices, augmentation of effluent treatment plants, and reuse, recycle of treated effluent, which resulted in reduction in specific freshwater consumption, wastewater discharge, and pollution load, and improvement in compliance of all these things. लेकिन जब हमारी सरकार होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलती है तो मैंने जो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का विषय है वो आपके साथ बताया है। राज्य सरकारों का भी इसमें सहयोग है, जिन राज्यों में से गंगा जाती है, और जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है वो उसको पूरी तरीके से देखता है। और इसलिए आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ और मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि हम सभी लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट को एक जन आंदोलन बनाएं और सरकार के मंशा को भी पूरा करें। लेकिन आपको ये जानकर के गर्व होगा और होना चाहिए कि जब हम कॉप में, बायोडायवर्सिटी कॉप में गए थे, वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संस्थान है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को वाटर रिजुविनेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट करके अभिनंदित किया गया था। आपको और हमको सबको गर्व होना चाहिए और ये प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। दूसरा विषय आपने जो नहीं, गंगा नहीं आया है, ये पुरस्कार जो है ना, ये 2014 के पहले नहीं मिला है, 2014 के बाद मिला है। पॉल्यूशन 2014 से पहले हुआ, उसको ठीक करने का काम अब हो रहा है। इतना तो आप मानेंगे क्या? ऐसा अधीर रंजन, ओके प्लीज। ऐसा है, कुछ लोग काम करते हैं वो हम हैं, कुछ लोग काम तमाम करते हैं वो आप हैं। और दूसरा विषय जो आपने उठाया है वो आपने उठाया है कि ये जो गाइडलाइंस हम इशू करेंगे, ये गाइडलाइन राज्यों के जो अपने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे या उनके अधिकारों को तो नहीं लेंगे। हम कोई गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं करेंगे जिसमें ये लगे कि उनके अधिकार हम अपने हाथ में ले रहे हैं। हम वो गाइडलाइन जारी करेंगे जो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, नियमों का सरलीकरण, आम आदमी को सहायता करने वाली गाइडलाइन हो, और वो गाइडलाइन ही ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग के पैमाने पे जो प्रधानमंत्री जी के संकल्प है उसको आगे बढ़ाने वाली होगी। उसी के अनुरूप इसको संघीय ढांचे के अनुरूप ही किया जाएगा। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न के कि खंड 2 और 3 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रोफेसर सौगत राय संशोधन संख्या 3 और श्रीमती प्रतिमा मंडल साथ साथ हैं आजकल दोनों। Sir, I move the amendment. I also move the amendments. प्रश्न है कि सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मंडल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 और 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 4 और 5 विधेयकांग बना। सौगत राय जी संशोधन संख्या 4 और 5, श्रीमती प्रतिमा मंडल। Sir, I move the amendments 4 and 5. प्रश्न है कि श्री सौगत राय श्रीमती प्रतिमा मंडल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, दादा बोलो तो सही कोई हाँ। हाँ हाँ हाँ। आप भी हाँ नहीं बोल रहे। हाँ हाँ। आपका बहुमत नहीं, आप दो ही रह गए, दो में भी आप नहीं बोल रहे। जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन अस्वीकृत हुए।
प्रश्न है कि खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बना। स्वागत राय और श्रीमती प्रतिभा मंडल, संशोधन संख्या 6 और 7। सर, अरे सुनिए, ये एक साथ मिलकर तो बोलो, अलग अलग बोल रहे हो आप। नाम है, ठीक है सर। आई मूव द अमेंडमेंट्स। ये पहले था बीजेपी का सब पनिशमेंट होता है, और अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम में सब पनिशमेंट छोड़ दिया जाता है। प्रश्न है कि स्वागत राय द्वारा श्रीमती प्रतिमंडल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 और 7 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बना। स्वागत राय और श्रीमती प्रतिभा मंडल, संशोधन के 8 और 9। सर, आई मूव द अमेंडमेंट। आपका कोई अलग विचार तो नहीं प्रतिमा जी? नहीं सर, कोई नहीं। आप क्यों उनको टोकते हैं? लो रूल्स निकालो, रूल्स की किताब निकालो, किताब रूल्स नंबर निकालो ना। मैं रूल का नंबर दिखाता हूँ। चलो थोड़ी देर बाद लाना। प्रश्न है कि श्री स्वागत राय द्वारा और श्रीमती प्रतिभा मंडल द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 8 और 9 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बने। श्री जसवीर सिंह गिल, संशोधन संख्या 11 और 12। सर, आई मूव द अमेंडमेंट। खड़े होके बोला करो, बैठ के मत बोला करो। सर, आई मूव द अमेंडमेंट सर। प्रश्न है कि जसवीर सिंह गिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 और 12 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें। आप भी दो ही रह गए क्या? डिवीजन हो गया क्या आपके? पूरा दल भी आपके साथ नहीं है। प्रश्न है कि जसवीर सिंह गिल द्वारा प्रस्तुत संख्या 11 और 12 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें। कोई नहीं। हाँ हाँ सर, हाँ सर। जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 12 से 14 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 से 14 विधेयक का अंग बने। जसवीर सिंह जी गिल, संशोधन संख्या 13। सर, आई मूव द अमेंडमेंट सर। ये इंडिविजुअल आप कर रहे हो, आपका दल नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना। आप दल आपके विरोध में है। प्रश्न है कि जसवीर सिंह गिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में के, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 15 विधेयक का अंग बने। स्वागत राय, संशोधन क्या 1। अमेंडमेंट। ये सब बिजनेसमैन। प्रश्न है कि श्री स्वागत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। स्वागत राय और श्रीमती प्रतिभा मंडल, संशोधन संख्या 2। सर, आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न है कि श्री स्वागत राय श्रीमती प्रतिभा मंडल द्वारा प्रस्तुत संशोधन को 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए। देखो, आपका कांग्रेस कोई समर्थन नहीं कर रही। जो
जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकार। जसवीर सिंह जी गिल, संशोधन संख्या 10। जसवीर सिंह जी गिल नहीं है सर, रहने दीजिए, नहीं है सर। अब उनका दल ने साथ नहीं दिया, छोड़ गए वे। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्तावित करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 9 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।